The Girl Who Can is a story set in the African country of Ghana. The story basically revolves around a girl called Adjoa, and Adjoa has two important people in her life. So, if you get a question in MCQ format that who are the two people, the two closest people in Adjoa's life, then the two people who are very close to Adjoa are her mother, whom she calls Mami. Her name is Kaya. And number two, her grandmother, whom she calls Nana. So please remember that the main character of the story is Adjoa. She is a young girl of around 10-11 years old, and she is very close to her mother, whom she calls Mami, but her name is Kaya, and she is very close to her mother's mother, that is Nani. In India, that is Nani, but she calls her Nana. So Nana here is basically her grandmother or maternal grandmother. Now, sorry, she is 7 years old, not 10 years. So Adjoa is 7 years old. So basically, this story is also a story of coming of age, because we have the oldest character, the character of the granny, Nana, who is an orthodox woman. She holds on to the belief that girls should be born with thick and healthy legs, so that their hips would be able to support child, or they would be able to support children during childbirth. So Adjoa's granny is upset because Adjoa has very thin legs, and she believes that it's a handicap, or it's a problem, because she will not be able to bear healthy children in future. On the other hand, the young girl Adjoa feels perplexed or confused by all these things. She believes that her legs are quite fine because she is able to walk to and fro 5 kilometers from her home to school and back. So she feels that her legs are quite fine. The mother is the mediator in between. So Adjoa's mother is older than Adjoa and obviously younger than the granny. So she is the mediator. She does not have a voice of her own. She cannot oppose her own mother, and she cannot openly support her daughter Adjoa. So you have three generations here. One is Adjoa's granny, that is Adjoa ki nani, whom she calls Nana. Second is Adjoa's mother, whom she calls Mami. And second is Adjoa, the third is Adjoa, the 7-year-old girl. Towards the second half of the story, we find that Adjoa takes part in a school race. She is selected for it. She is surprised, and her granny is happily surprised. So please note that her granny basically always demeans her or humiliates her for having weak and thin legs. But eventually she wins the race, and when she wins the race, it is her granny who is the happiest. She carries the trophy high up her head, and she celebrates the joy of Adjoa's thin legs. She eventually realizes that even if her legs are thin, they may support her and help her win the race. So granny eventually realizes that even if you have thin legs, that does not mean that you are a weak person. You may still be a strong person. You may still win the race of life. So it is a coming of age story where an orthodox minded grandmother eventually accepts modernity. She becomes liberal to the idea that even if you are physically thin, you may still win the race of life. And that is why the title of the story is The Girl Who Can, which means the girl with the thin legs who can win the race of life. That is the complete title in a way, the figurative meaning. Okay, so in Hindi, in this story you have एक लड़की है 7 साल की, उसका नाम है अज्वा.
उसकी माँ है जिसको वो बुलाती है मामी, बट उसका नाम है काया। और उसकी नानी है जिसको वो बुलाती है नाना। सो अज्वा की जो नानी है वो अज्वा को हमेशा ब्लेम करती है और हमेशा उसे नीचा समझती है, क्योंकि उसके थिन लेग्स हैं, पतले पैर हैं। और उसकी नानी को लगता है कि ये एक डिफेक्ट है, बिकॉज वो जब बड़ी हो जाएगी तो वह अच्छे से हेल्दी चिल्ड्रन को बेयर नहीं कर पाएगी, वो हेल्दी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। वो एडुकेशन के भी खिलाफ है। तो वो एक टोटली ऑर्थोडॉक्स ओल्ड वुमेन है, जिसे लगता है कि एक वुमेन का रोल या वुमेन का मेन रोल यही है कि वो हेल्दी चिल्ड्रन बेयर करे। अज्वा कंफ्यूज्ड है। अज्वा को लगता है कि उसके पैर तो सही सलामत हैं, वो 5 किलोमीटर्स डेली स्कूल जाती है और स्कूल से लौटती है, चल के जाती है। बाद में जब अज्वा एक स्कूल के रेस में पार्टिसिपेट करती है और वो रेस जीत जाती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके थिन लेग्स हैं, तब अज्वा बहुत खुश होती है। लेकिन अज्वा से भी ज़्यादा खुशी मिलती है अज्वा की उसी नानी को जिसने हमेशा अज्वा को नीचा दिखाया था। ऐसा नहीं है कि अज्वा की नानी उसे प्यार नहीं करती, बट अज्वा की नानी को हमेशा लगता है कि अज्वा में एक डिफेक्ट है, वो है कि उसके पैर बहुत ही थिन है। इस बात के लिए अज्वा की नानी उसके अपनी बेटी को यानी अज्वा की माँ को भी ब्लेम करती है कि तुमने एक गलत इंसान से शादी की है। हालांकि अज्वा के फादर को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है। सो अज्वा के फादर का एक पैसिव रोल है, पैसिव प्रेजेंस है, विच मीन्स वो एक्टिवली नहीं है कैरेक्टर स्टोरी में, बट पैसिवली उनके बारे में बात होता है। लास्ट में जब अज्वा रेस जीत जाती है, सो अज्वाज ग्रैनी फील्स एज इफ कि वो इस बंदिश से बाहर आ जाती है, वो इस सोच से बाहर आ जाती है, एंड फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन शी बिकम्स स्लाइटली लिबरल। उसका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा आधुनिक होता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अज्वा और उसकी नानी, जिनमें एक गैप था 2 जनरेशन का, वो गैप काफ़ी हद तक रिकॉन्साइल होता है, काफ़ी हद तक वो गैप मिल जाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो है द गर्ल हु कैन। ये स्टोरी इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ऑल्सो एन असॉल्ट अगेंस्ट पेट्रियार्की एंड ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। तो ये स्टोरी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी पे एक असॉल्ट भी है, यानी वो सोसाइटी जहाँ पे वुमेन के रोल को सिर्फ डोमेस्टिक रोल में प्रेजेंट किया गया है कि वुमेन का काम है सिर्फ घर के काम करना और बच्चे पैदा करना। इस बात को अपोज किया गया है बाय द ऑथर, और इस बात को भी अपोज किया गया है कि कि कंट्रोल जो है वुमेन का वो काफ़ी कम है दुनिया में। ये प्रेजेंट किया गया दैट इवन इन दिस वर्ल्ड वुमेन हु आर फिजिकली वीक और फिजिकली थिन, इवन दे हैव अ से। सो दिस इज़ द ओवरऑल थीम एंड आइडिया ऑफ द स्टोरी। तो ये स्टोरी एक फेमिनिस्ट स्टोरी भी है, ये स्टोरी एक एंटी पेट्रियार्कल स्टोरी भी है, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं जनरेशन गैप के बारे में भी है कि द यंगर जनरेशन डज नॉट अंडरस्टैंड द ओल्डर जनरेशन, और जो ओल्डर जनरेशन है दे डू नॉट अंडरस्टैंड और दे डू नॉट एग्री विद द यंगर जनरेशन। बट इवेंचुअली कोई एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ओके